Assalamu alaikum. I just came back from my classes abhi, and I will be talking about something that happened with me around, I don't know, पिछले साल or around 2 years back. Not exactly something happened with me, more like an experience I would like to share with you guys. अभी आया हूँ, बैग शैग रख लूँ, ज़रा सांस ले लूँ, फिर बताता हूँ. अच्छा, so what I'm about to tell you guys, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को आइडिया नहीं होगा. Basically, I am a Markhor. I'm not talking about the animal Markhor. Oh. I'm talking about the event Markhor और उसके जो भी alumni कह लें आप लोग होते हैं, you refer them as Markhors. I am a Markhor of 2016, definitely 2016. Markhor is basically a wilderness based conference. हमारी बारी जो हुआ था, they took place in Mushpuri Peaks. It was a 4-day event. 3 nights we had to stay at Mushpuri Peaks पे. No access to any electronic devices except for cameras. Phones वगैरह हमने basically ले लिए थे. I didn't start making videos back then in 2016, so all these pictures you will be seeing बीच में are the pictures my mentor took or our friends took. जब हम वहाँ पे गए, we were given this objective कि you need to make an impact, and whenever someone used to use the word impact, we used to do like this. So जब ज़्यादा लोग इस तरह करते थे तो it was a very nice sound to hear. One of the symbols I really loved the most, and this is one of the things that I felt कि this is a necessity. Whenever everyone was talking and someone had to say something important या चुप कराना था सबको होता था, तो we used this sign. Usually होता क्या है कि कोई बोल रहा होता है ना, आप चुप कराने नहीं कहते हैं, उससे यार चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, उससे शोर और बढ़ता है. In that case things get worse. That's my opinion. और अक्सर आप लोगों का भी होगा. तो this symbol was a symbol for it's time to get silent. Apart from that और भी चीज़ें थी. There was this Markhor move. Everyone used to stand in a circle और फिर they used to do this Markhor move. I can't explain in words. It was really enthusiastic, I would say. Why I applied for Markhor was कि I heard about it. I saw pictures of the Markhor event. Mushpuri Peaks. पहले दिन हम लोग गए, हमने अपना सामान रखा होटल्स में कुछ, और जो नेसेसरी सामान था वो हम आगे लेके गए. They gave us bags, necessary equipment, light torch वगैरह. वो ये था कि पहले दिन बारिश हो गई थी, तो we couldn't start hiking right away. We had to wait. बारिश अच्छा when we went it was around autumn. बर्फ वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो बारिश में हम लोग we went there. रात को हम पहुंचे ऊपर पीक्स पे. मैं unfortunately ना होने के बराबर स्वेटर लेके गया हुआ था, very पतला स्वेटर्स, and I had this one jacket जिसकी मैंने अंदर थर्मल वाला पोर्शन निकाल दिया था. So I was literally shivering all the time. अपने टेंट्स वगैरह देखे. मार्खोर में यूजुअली होता ये है कि जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स कह लें, आप सिंडिकेट्स बना देते हैं और फिर ग्रुप मेंबर्स को ना नंबर कर देते हैं. Everyone picks their own numbers. They do this head count, which is कि बंदा मिसलेस तो नहीं हो गया, कोई बंदा गायब तो नहीं हो गया. Number 1 used to say head count and everyone used to say their number in sequence. So everyone had to be alive to the situation. My number was around I guess 5. I don't remember exactly. 2 साल almost हो गए. मैं digging into the details. So Gurdesi just came back. First day we went there और bonfire थी वहाँ पे, and basically होता ही था कि sessions होते था. कुछ motivational speakers थे, काफ़ी ज़्यादा थे as a matter of fact. Different regions से आए हुए थे, कुछ पाकिस्तान से बाहर से भी आए हुए थे, who were Pakistanis there to tell their interesting stories and everything. And हमारा जो theme था, I forgot the theme. ग्रुप्स को दे कॉल्ड ट्राइब्स, और हमारे ट्राइब का जो नाम था वो एम्पैथी था. तो डिफरेंट एक्टिविटीज थी. 4 days थे, 3 nights इन आउट देयर इन द वाइल्ड विदाउट सेल फोन एंड एवरीथिंग. तो वी गॉट अ चांस टू गेट अलोंग विद एवरीवन. सारे डिफरेंट रीजन से आए हुए थे, कुछ नॉर्दर्न पाकिस्तान से आए हुए थे, कुछ सिंध से आए हुए थे. इट वाज बेसिकली अ गुड मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. सारी से ऊपर से लाइट्स बिल्कुल नहीं थी, सारी टॉर्चेस थी, हेड टॉर्चेस हम सबको दी हुई थी. डिफरेंट एक्टिविटीज थी. 2 एक्टिविटीज आई रियली लव द मोस्ट ड्यूरिंग दैट स्टे. एक थी रात के वक्त, वी स्टूड इन अ सर्कल, द bonfire was off, ठीक है, and they asked every one of us to turn our lights off. Even their staff turned their lights off. It was completely dark, like literally अंधेरा, सिर्फ moonlight और stars, that's it. When you go up, as in altitude में आप ऊपर जाते हैं तो like sky or everything becomes clear. तो stars were visible and that is a wonderful sight on its own. Markhor जो है basically youth impact का एक event है. Sir Sarmad है, who is the head of youth impact. He started giving a motivational talk. It was really motivational. You have literally no idea. इतनी motivational थी कि I can't explain. I can't do justice to how good he was. खुद ही पे बात की, इकबाल वाली और शाहीन पे बात की, and he was building the conversation in such a well planned manner कि मतलब बंदे को like literally feels में आ जाता है. जब उस conversation, उस बात का literally climax पहुंच जाता है, पीछे से fireworks and then at the end bonfire lit up.
Well, like, that was something really wonderful and beautiful. I really loved that. That was one. The other was there's basically Mushpuri Peak 1 and there's Mushpuri Peak 2. We were on Peak 1. Our objective was to go from Peak 1 to Peak 2. This happened on the last day. By the time we got to know one another and everyone, like, काफी activities हो चुकी थी, तो we knew कौन किस तरह है. अच्छा, one more activity. Sorry, I'm आगे पीछे jumbling up because मुझे जो बात याद आ रही है, I'm telling you guys. एक था उसमें questionnaire था, and anyone who filled that questionnaire सबसे पहले correctly, he would get a certain prize or something. तो उसमें basically ये था कि बंदे की personality traits बताए हुए थे and guess that person कौन है, बंदा इस तरह करके था. Interestingly मेरा बीच में था कि son of a brigadier करके इस तरह करके statement थी ना. My team members, they came up to me and they were like, यार ये कौन brigadier का बच्चा है, जरूर कोई बड़ा ना खबीस टाइप होगा या बड़ा शोधा टाइप होगा. मैं चुप हो गया, उसकी बात हंसता रहता. उसने 2-3 दिन मेरे से बात की एंड उसमें मेरे पोइट्री का भी मेंशन था उसी सेंटेंस में ना. समवन हैड रेड माय पोइट्री आई गेस, या मैंने मेंशन कर दिया था आई डू पोइट्री इंट्रोडक्टरी सेशंस में. थर्ड और द फोर्थ डे ही गेस्ड इट. बेबरस उस बंदे का नाम था, कोयटा का रहने वाला था. ही वाज लाइक, ये तुम हो, ही वॉज लिटरली नॉट बिलीविंग मी, तुम हो ही नहीं सकते. अक्सर लोगों के परसेप्शन इस तरह बना हुआ है कि आर्मी ब्रैट्स जो होते हैं यूजली काफ़ी ईगो आ जाती है उनमें, काफ़ी डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं. हर किसी पे बात ये अप्लाई नहीं होती है. आई वोंट नेगेट इट, ऐसे लोग हैं, आई एडमिट इट, बट हर कोई ऐसा नहीं होता. अच्छा खैर, बैक टू द सेकंड पार्ट. सो वी हैड टू गो फ्रॉम पीक 1 टू पीक 2. उसमें हमारा टास्क बेसिकली ये था कि वी डोंट नो एनीवन. इमेजिन एज इफ यू आर देयर अलोन. सो वी गॉट वन प्रेप टॉक, मोटिवेशनल प्रेप टॉक. वी गॉट अनदर वन. बीच में जो points थे, they had made 5 to 6 checkpoints. At every checkpoint we got a questionnaire. Questions थे basically इस तरह थे, what are you in 2016. मजे की बात ये है कि while we were walking from point A to point B, there was pin drop silence, like literally pin drop silence. Next stop पे there was कि where do you see yourself in next 5 years. फिर अगले point पे you have made your 5 years goal, where are you now after 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. It was basically a picture of how do you imagine yourself progressing in life. It was one of the most self-reflecting things I've ever experienced or I've ever had the chance to practice. बंदे को ना पता चल जाता है, clarity आती है. It was such a wonderful activity. I really loved it. In life you want some clarity, just take a moment out and I would recommend go to a place जो कि naturally beautiful हो. Sit there, think about life and think about whatever your worries are or whatever you want to be clear about. Think them with an open mindset. Maybe things would work out well. I said find a nice place with natural beauty. यार natural beauty देखने का ना हर किसी का अपना perspective होता है. कोई बंदा जो है ना टैप वाटर जो होता है ना उसी को देख के ही वुड से अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ बंदे सिर्फ आसमान पे देखते हैं, दे लाइक स्टार्स हैं यार, दो सितारे नजर आ रहे हैं, पोल्यूशन बहुत आजकल बहुत है, वही बहुत प्यारी है. सम प्रेफर समथिंग एल्स. ऑब्वियसली यू कांट गेट द आइडियल कंडीशंस. जितना आपके पास अवेलेबल है, जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, एक्सेप्ट इट. सो दैट वाज माय मार्खोर एक्सपीरियंस एंड यस, आई एम अ मार्खोर and I'm a part of Youth Impact indirectly. I'm not part of Youth Impact, but I'm a Markhor, so that makes me an impactor, a youth impactor. And that is exactly where I'm gonna end the vlog. I hope you guys like this video. Let me know in the comments down below. Bye.